Morning student, Jai Jinendra. Welcome back to our e-learning classes by Vardhman School. In last class we start our new chapter, that is the polynomial. About the polynomial we have discussed constant, terms, degree, types of polynomials. After that, zeros of the polynomials we have to find. Today we start our new topic, that is the find of any polynomial remainder when we divide to a polynomial. Like that, if we take a polynomial example px, that is the x cube plus 2x square minus 4x plus 5, this polynomial we have to divide by gx is equals to x minus 2. Then we know that if we divide any number to other number, then there is a quotient and there is the remainder. In case if this division is perfect division, then the remainder will be 0. Like that, just take an example 15 divided by 6. If we divide 15 divided by 6, then 15 2 times 12 and 3. So this one is the quotient and this one is the remainder. That means there is the such type of a remainder. So we have to write this dividend is equals to divisor into quotient plus remainder. That 15 is equals to 6 into 2 plus 3. So 15 is equal to 6 into 2, 12. 12 plus 3, 15. That statement is called remainder theorem. Remainder theorem. But in this chapter, we have to find a polynomial remainder when divide to other polynomial. So that's why there are two types of process. First one, put this value into this polynomial like that x minus 2 is equals to 0. First of all, x minus 2 is equals to 0, x is equals to 2. Now put this value in this polynomial, then p2 is equals to 2 cube plus 2 square minus 4 into 2 plus 5, 8 plus 2 into 4 minus 8 plus 5, 8 to 8 cancel out because plus and minus, remaining 8 plus 5, that is 13. So remainder will be 13 when we divide this polynomial by x minus 2. अगर x minus 2 से इस polynomial को divide करेंगे तो remainder 100% क्या आएगा, 13 आएगा. So this is the first method. If we have to use the first method, then we have to go to the put this value into the polynomial and find out the remainder. Now we move on our second method. This is the long division method. Second method is long division method. In this method, we have to properly divide x cube plus 2x square minus 4x plus 5 by x minus 2 given polynomial. हमें इस पॉलिनोमियल को x minus 2 से प्रॉपर्ली डिवाइड करना पड़ेगा. अब आप कहोगे कि सर ना पॉलिनोमियल नंबर्स होता है जैसे 15, 17, कोई भी नंबर होता है उसको तो हम डिवाइड कर सकते हैं. यहाँ पे तो वेरिएबल्स है, कैसे होगा पॉसिबल, हम देखते हैं. Take first variable x cube, this first variable x, separately रफ के अंदर इनको डिवाइड करो, that is the x square. ये x square आप यहाँ पुट कर दो
एक्स स्क्वायर। कोई डाउट ना? अब इस एक्स स्क्वायर को दोनों टर्म से इंडिविजुअली क्या करवाओ, मल्टीप्लाई। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस टू एक्स स्क्वायर। वापस रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट एक्स क्यूब और फर्स्ट एक्स दोनों को सेपरेटली डिवाइड करवाया, रिमाइंडर रहेगा एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को यहां पुट करके इन दोनों से इंडिविजुअल क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। देन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू टू, माइनस टू एक्स स्क्वायर बिकॉज देयर इज द माइनस। आफ्टर दिस हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमारे पास डिवीजन प्रोसेस में जाते हैं, देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। सो दिस टाइम वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, देन सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड नंबर्स हैव टू साइन चेंज। मतलब ये जो नीचे वाली टर्म है इनके साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। चेंज मतलब प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। देयर इज द प्लस, दैट्स व्हाई माइनस, देयर इज द माइनस, दैट्स व्हाई प्लस। दिस आर कैंसल because x cube plus का और x cube minus का, and both are plus, that's why 4x square। दोनों ही सेम है, that's why 4x square and minus 4x goes to downwards। नेक्स्ट डिजिट को हम क्या करते हैं, नीचे लेते हैं डिवीजन में, तो नेक्स्ट डिजिट there is the minus 4x। ये पूरा एक टर्म है ना। अब क्या है अपने पास, 4x square, ये 4x square, यहां क्या है x, ये x, क्या बचेगा 4x। पुट हियर 4x multiplied by these two terms, 4x into x, 4x square minus 8x। अगेन सेम प्रोसेस, प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में, माइनस प्लस, ये तो कैंसिल, सेम टर्म। यहां देखो -4 एंड प्लस 8, -4 and plus 8, that is the 4। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो आंसर इज 4x and 5 comes to down। Now there is the 4x and there is x, and remainder 4, put here 4 multiply x, 4x, 4 multiply 2 minus 8, again same process, minus plus, cancel out, 8 plus 5 13, this will is your remainder, this is your remainder। So in first we have to find, put the value by the remainder, that is the also 13, and after the long division this one is also 13, so in both case remainder will be same। अब आप कहोगे कि सर अगर रिमाइंडर सेम आएगा तो हम लोग ये मेथड क्यों करें, हम तो वही मेथड करेंगे, जनरल है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा लंबा है, लेंथी है, दिमाग लगाना पड़ता है, उसमें इजीली जल्दी से हो जाएगा। तो चांसेस ये होते हैं कि अगर आपको बोल दे कि चेक this is the factor of this polynomial or not। factor means ये वैल्यू को अगर मैं यहां पुट करूं या फिर इसको इससे डिवाइड करवाऊं तो मेरे पास रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0, तभी वो फैक्टर होगा। दैट इज द सेज दैट 12 डिवाइड बाय 6, तो क्वेश्चन 2 रिमाइंडर 0, दैट मींस 12 is the multiple of 6, 12 is the multiple of 6, yeah, 6 is the factor of 12, 6 is the factor of 12। like that अगर मैं इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करवाऊं और रिमाइंडर 0 आ जाता है तो क्या है, फैक्टर है। सो क्वेश्चन आ जाता है कि चेक दिस पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ दिस, देन आप रिमाइंडर थ्योरम वाला प्रोसेस अप्लाई कर सकते हो, जिसके अंदर आप वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो। बट अगर क्वेश्चन दे देता है कि बाय डिवीजन मेथड चेक दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस और नॉट, या बाय डिवाइड, तो आपको ये प्रोसेस करना है, अदरवाइज आप फर्स्ट प्रोसेस में फॉलो कर सकते हो। ओके, कोई डाउट इसमें नहीं? चलो एक एग्जांपल और लेते हैं इसी का ही। एक एग्जांपल और लेते हैं।
3x cube minus 2x square minus 5x प्लस 4 और gx दे दिया है x plus 2. ठीक है. Now again same process. 3x cube minus 2x square minus 5x plus 4 then x plus 2. First there is the 3x cube and there is the x divided by x, remainder 3x square. Put here 3x square. After this multiply this both values, so 3x cube and plus 6x square. Now change the sign, minus and minus, these are the cancel. Again there is the minus and there is the minus, so minus 2 minus 6 minus 8 minus 8x square and minus 5x goes down. Now there is the value minus 8x square divided by x minus 8x. If there is the minus, we have to consider minus. So now minus 8x square and minus 16x plus minus minus, sign change, plus plus, cancel out. Minus 5 plus 16, minus 5 plus 16, there is the 11, positive 11x and plus 4 goes down. Now there is 11x divided by x, remainder will be 11, put here 11x plus 22 minus minus, cancel out. 4 minus 22, that is the minus 18. So minus 18 is remainder of this polynomial. Minus 18 is remainder of this polynomial when we divide this by x plus 2. So I think understand the remainder theorem and the long division method of polynomial. Now there is homework of your today's, that is exercise 2.3. In exercise 2.3 there is the first question, find the remainder when x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by x plus 1, x minus 1 upon 2, x plus 5 and 5 plus 2x. मतलब 5 केसेस दे रखे हैं, एक पॉलिनोमियल दे रखा है, उस पॉलिनोमियल को 5 अलग अलग केसेस से अगर डिवाइड करते हैं तो सब में आपको रिमाइंडर निकालना है. तो आप इसको रिमाइंडर थ्योरम से करेंगे. रिमाइंडर थ्योरम से करेंगे तो उसके अंदर पर्टिकुलर जो वैल्यू है, जैसे लाइक दैट x प्लस 1 अपॉन 2 है, इससे डिवाइड करना है. तो आप क्या करोगे, x plus 1 upon 2 put equals to 0, then x is equals to minus 1 upon 2 and this value put in the polynomial and find the remainder. After this there is the question x plus pi. Sir, x plus pi, how is it possible? Don't worry, pi is equals to 22 upon 7. Put this value, x plus 22 upon 7 again equals to 0 minus 22 upon 7, this put in the polynomial and find the remainder. Okay, now move on. Second question, find the remainder when x cube minus ax square plus 6xa minus a is divided by x minus a. In this question we have to divide. You have to divide the polynomial by long division method and check whether 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x. In third question you use the remainder theorem.
because there is the check method. Okay. So today's your homework is 2.3 exercise, and also I will give you some examples of regarding to this topic that you have to note down your notebook and complete your work, because after school reopen your exam will be started. So be prepared for exam, and those course will be completed in your online classes that comes in your exam. Okay, thank you, have a nice day, stay home, stay safe.